Assalamu alaikum dear students. My name is Saifullah and I welcome you all to STEM International. Grade 1, Chapter 6, Tux Paint. Tux Paint is a free, award-winning drawing program for children aged 3 to 12. It has many built-in tools that help create beautiful drawings. ये बच्चों के लिए बहुत ही आसान से टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप मजे की ड्राइंग्स बना सकते हैं. Starting Tux Paint. To start Tux Paint, follow these steps. Step 1. Click on the Start button. Step 2. Click on All apps. Step 3. Click on the Tux Paint folder. Step 4. Click on the Tux Paint Full Screen option. इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी स्क्रीन पर टक्स पेंट की टाइटल स्क्रीन आ जाएगी. The Tux Paint title screen will appear. After a few moments, the title screen disappears and you will get the main screen. आपके टक्स पेंट की मेन स्क्रीन कुछ इस तरह से नजर आएगी. इसमें एक साइड पर टूल बार, सेंटर में व्हाइट एरिया, ड्राइंग एरिया है, नीचे कलर्स दिए गए हैं, हेल्प एरिया है एंड द सिलेक्टर. अब हम इन पार्ट्स को बारी बारी देखते हैं. The main screen of Tux Paint has the following parts. Tool bar. It is located on the left side of the Tux Paint window. It contains tools such as paint, stamp, lines and shapes to draw and edit the pictures. इन tools को इस्तेमाल करके हम पेंट कर सकते हैं, स्टैम्प्स कर सकते हैं, लाइंस और शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं. Our next tool is the selector tool. It is on the right side of the Tux Paint window. When we select a tool from the toolbar, various options of the tool appear in the selector area. The next part of our window is drawing area. It is the area where we draw a picture. Help area. This area is below the color palette. It shows helpful tips and other information while working in Tux Paint. Color palette. It is at the bottom of the Tux Paint window. We can choose a color of our choice from here. यहाँ ये बात जानना भी जरूरी है. The tips and the other information in the help area are given by a Linux penguin, an encouraging cartoon mascot. अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम न्यू ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं टक्स पेंट पर. Creating a new drawing. To create a new drawing, follow these steps. Step 1. Click on the new button. Step 2. Click on the down arrow button to see ready-made pictures. Step 3. Select the drawing and double-click on it. इस तरह से आपकी नई ड्राइंग्स स्टार्ट हो जाएंगी. अब हम कुछ टूल्स को thoroughly स्टडी करते हैं. The first one is a paint tool. The paint tool is used to paint and draw anything that you like. इसके लिए steps हैं. Step 1. Click on the paint tool. Step 2. A list of many brushes will appear in the selector. Select any brush pattern. Step 3. The pointer changes to paint brush. Press the left mouse button and drag. The pattern will be drawn. Now release the mouse button. इन steps को follow करके आप अपने drawing area पर कुछ भी draw कर सकते हैं. Our next tool is fill tool. The fill tool is used to fill color in the drawing. To color the drawing, follow these steps. Step 1. Click on the fill tool. Step 2. Click on the down arrow tool. Step 3. Select the fill effect from the selector. Step 4. Select any color from the color palette. Step 5. Click on the drawing to fill color in it. इस तरह से आपकी किसी भी बनाई गई ड्राइंग में आप कलर्स फिल कर सकते हैं. हम इस दिए गए लिंक को इस्तेमाल करके टक्स पेंट को फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं. अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी ड्राइंग्स को इरेज कर सकते हैं. Erase the drawing. The erase tool is used to erase any part of the drawing. Step 1. Click on the eraser tool. Step 2. Press and hold down the left mouse button and start moving the cursor on the drawing.
the drawing will be erased. जहाँ जहाँ पर हमारा इरेजर जाएगा वहाँ से हमारी ड्राइंग और हमारे कलर्स रिमूव होते जाएंगे. Now we will see how we can apply shapes in our drawings. We can draw both filled and unfilled shapes using the shapes tools by following these steps. Step 1. Select the shapes tool from the toolbar. Step 2. Many shape options will appear in the selector area. Click on a shape, then click on the drawing area. The shape will appear on the drawing area. The shape will appear on the canvas with a rotating handle. आपको कुछ इस तरह का हैंडल नजर आएगा. Step 3. Press the mouse button to draw and drag the shape. अब हम इन ड्राइंग्स को सेव करना सीखेंगे. Saving the drawing. To save your drawing, click on the save option in the tool bar. अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम सेव करने के बाद अपने टेक्स्ट पेंट को क्लोज कर सकते हैं. Closing the text paint. To close text paint, follow these steps. Step 1. Click on the quit tool. Step 2. A window will appear. Click on the yes button if you want to close. Step 3. Click again on the yes button if you want to save your drawing before closing. हम किसी भी सेव्ड प्रोजेक्ट को या किसी भी सेव्ड ड्राइंग को ओपन भी कर सकते हैं. Opening the drawing. To open a drawing, follow these steps. Step 1. Click on the open tool. Step 2. Select the drawing that you want to open, and the selected file will be opened. TuxPaint Review. TuxPaint is a paint program designed for children. It has many ready-made tools that help you create beautiful drawings. Drawing area is the area where we draw a picture. The fill tool is used to fill color in the drawing. The paint tool is used to draw and paint anything that you like. The eraser tool is used to erase any part of the drawing. To save your drawing, click on the save option on the toolbar. For the checkout activity, where can you find pictures of flowers, animals, and other objects like cake in TuxPaint? Which tool allows you to insert these objects into your drawing? And also search for rainbow in the toolbar and write your name using